इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग प्लीज़ आस्क. मैं कुछ बोल रहा हूँ आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आस्क. इज देयर एनीबडी हु डजंट अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ हिंदी? हु डजंट अंडरस्टैंड हिंदी एट ऑल? I guess not. Right? Yes, sir. Danisha. Danisha. Okay. Well, best of luck to you in that case because majority of the people don't understand English in this one. Recording will be there, so we can discuss it. So, how many of you are not comfortable with English at all? May I ask? Is there anybody who does not understand English at all? आप सवाल हिंदी में पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है इंग्लिश तो आप पूछेगा. कुछ मैं बोल जाता हूँ तेज़, आपको नहीं समझ में आता तो पूछ लीजिएगा. सो आई थिंक आई विल गो अहेड विद इंग्लिश ओनली, and if there's something who don't understand something I said, please stop me and ask. Okay, so let's start. So my name is Ritesh. I'm a senior musician, and I've been working as the country manager and director for RSL Awards since 2018. It's been 6 years now, and today we are going to be discussing primarily Rock School. रॉक स्कूल क्या है, उसके एग्ज़ाम्स कैसे परस्यू करने हैं, उसके बारे में हम फोकस करेंगे आज. So we will briefly talk about all the 5 brands as well, but right now let's just start with what RSL is. So RSL is a contemporary creative industries qualifications. So we are leading awarding organization in the contemporary arts, leading in the world. So we are not just leading in India, we are leading in the world, right? John, please keep managing the participants who are coming in. Okay. So we are the leading organization for contemporary music, performing arts and creative media in the world. And we do about 100,000 exams. 1 lakh एग्ज़ाम कुछ हर साल हमारे होते हैं. We are currently active in 63 plus countries. And we can be active in any country which has internet practically because we are digitally advanced in a lot of ways. So the awarding qualifications are regulated by Ofqual. Ofqual is the Office of Qualifications and Curriculum Authority in UK. So this is the umbrella accreditation body on top of all the exam boards. That means we are at par with Trinity, ABRSM, LCM and any other exam board which is regulated by UK. हमारी qualifications Trinity, ABRSM मैप करती हैं बिल्कुल. तो Trinity, ABRSM, LCM सारे बोर्ड्स की जो भी qualifications हैं, सेम accreditation, सेम validity हमारे एग्ज़ाम्स की भी है. UCAS points are available on our exams as well. UCAS points होते हैं University and College Admission Services, and these are available at grade 6 and above, right? Because grade 8 के बाद college levels शुरू होता है, तो level 3 which is grade 6, 7 and 8 is where the UCAS points are available across all our qualifications. हमारे offices हैं China, India and Spain में, and we have a global rep network about 64 countries right now. And we are the leading provider of creative industries training such as BIM, the Brit School, Access, Creative College and Stagecoach and many more. तो हमारे काफ़ी यूनिवर्सिटी और कॉलेज लेवल इंस्टीट्यूट्स के साथ टाइप्स हैं जहाँ पे हमारी क्वालिफिकेशंस पढ़ाई जाती हैं ऑल ओवर यूके. इस समय आई थिंक अबाउट 13,000 बच्चे 13,000 स्टूडेंट्स डू आर क्वालिफिकेशंस एट कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ इन द यूके, schools, colleges and universities in the UK alone. Our qualifications are designed to engage students and prepare them for a lifelong love of the arts. So it is not just about getting certificates. हमारा जो content है, that is something that the kids will really enjoy doing. So they will, it will really work well for them. Creative departments in schools and colleges grow their student numbers because हमारा curriculum इतना interesting है कि बच्चे पढ़ना चाहते हैं ये चीज़ें, तो वो बार बार आके हमसे मतलब हमारा curriculum आपसे डिमांड करेंगे आगे. This will help you grow your business as well. Accepted by colleges and universities worldwide. So यहाँ पे हम बात करेंगे कि 5 brands क्या हैं. Under the RSL Awards, we have 5 different brands which cater to 5 different products. So Rockschool, we are going to talk about that in detail. Rockschool is the contemporary arts, which is rock, pop and jazz music, all of that music. VQ is vocational qualifications. ये qualifications वो हैं जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज लेवल पे बाहर पढ़ाई जाती हैं हमारे, और बच्चे VQ करने के बाद अपने प्रोफेशनल करियर्स को परस्यू कर सकते हैं. तो vocational qualifications lead you to a professional pathway into colleges and universities and to your vocations thereafter.
PAA is Performance Arts Awards, which is dance, musical theatre, public speaking. All these things are part of PAA. RSL Classical is classical music. तो हमारे पियानो, वायोलिन, क्लासिकल गिटार ये अभी क्लासिकल म्यूजिक में अवेलेबल है. क्लासिकल वोकल्स विल बी एडेड सून. तो RSL क्लासिकल इज़ द क्लासिकल म्यूजिक एग्जाम्स. ये नया विंग है, अभी 2020 में ही शुरू किया है हमने. बट द क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड्स आर रियली एट पार विद ABRSM and above. CQ is creative qualifications. These are graded qualifications in podcasting and vlogging. एंड इनफैक्ट जो म्यूज़िक प्रोडक्शन है वो भी अब CQ के अंडर आता है, रॉक स्कूल के अंडर नहीं है. तो ओरिजिनली वो रॉक स्कूल के अंडर था, लेकिन बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू द क्रिएटिव डिजिटल मीडिया, तो वो भी अब CQ के अंडर आ गया है. तो वी हैव ग्रेडेड एग्जामिनेशंस इन व्लॉगिंग, पॉडकास्टिंग एंड म्यूज़िक प्रोडक्शन एज वेल. Today we will be discussing mainly rock school, right? These are some of the institutes and colleges and schools that we work very closely with. All of these people offer our vocational qualifications or graded examinations somewhere, right? Stagecoach is a very big like a dance coaching institute and theatre coaching institute which is in UK. एंड यामा म्यूज़िक के एग्ज़ाम्स भी हमारे एग्जामिनर्स करते हैं. वी ऑफर इनफैक्ट यामा स्कूल इज़ डूइंग रॉकस्कूल एग्जाम्स एज वेल फॉर देयर स्टूडेंट्स, एंड we are working in partnership with the education skill funding agencies in the UK, and a lot of things we are doing. So let's talk about rock school. So contemporary music exams. ठीक है, contemporary music में क्या आता है? Rock, pop, jazz, funk, reggae, R&B, soul and all the related genres, they fall under rock school. तो इसमें we have lot of subjects which we are going to discuss in a bit. So who is Rockschool? We are a leading accredited provider of rock and pop examinations. The Rockschool graded music qualifications are tailor-made for the contemporary musicians. Sorry, let me just mute my phone. So we started in 1991. So 1991 में Rockschool form किया गया था, and this was launched with the firstly basically for the rock music exams for electric guitar, bass guitar and drums. ये तीन instruments के लिए rock school शुरू किया गया था, which was a radical breakthrough because we brought the graded exam structure for the contemporary musicians which was always there for the classical musicians before. Trinity और ABRSM वगैरह बहुत सालों से classical music exams करते आ रहे थे, लेकिन rock and pop music के लिए कोई भी structured examination processes नहीं थे कहीं पे भी. और जो हमारे फाउंडर हैं नॉर्टन यॉर्क, ही वॉज स्टार्टिंग अ कोर्स इन द कंटेम्प्रेरी म्यूज़िक. जो बच्चे उसमें पढ़ना चाह रहे थे वो इसलिए नहीं ज्वाइन कर पा रहे थे क्योंकि उनके पास ग्रेड सर्टिफिकेट्स नहीं थे, क्योंकि दे वर प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट्स लाइक गिटार, बेस एंड ड्रम्स विच डिड नॉट हैव दोज क्वालिफिकेशंस. सो शुरू हुआ था एज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग. देयर वाज अ प्रॉब्लम दैट पीपल कुड नॉट गेट ऑन अ पर्टिकुलर कोर्स, सो दैट्स हाउ वी स्टार्टेड. बट स्लोली स्टडली इट हैज बिकम अ वेरी like big institution, and now we offer examinations in contemporary arts in a very wide variety. सो ये हमारे एग्ज़ाम्स का ब्रॉडली स्ट्रक्चर है. पहले हम एग्ज़ाम्स के बारे में बात करेंगे, उसके बाद फिर और डिटेल्स में बात करेंगे. तो जो हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं वो है पियानो, कीबोर्ड्स, इलेक्ट्रिक गिटार, अकूस्टिक गिटार. अकूस्टिक गिटार, इलेक्ट्रिक गिटार के अलग स्ट्रक्चर्स हैं, बिल्कुल अलग सिलेबस हैं. नॉट लाइक रॉक एंड पॉप की एक ही गिटार का है, उस पर अकूस्टिक पे भी बजा सकते हो, इलेक्ट्रिक पे भी. दोनों की बिल्कुल अलग सिलेबस है, अलग रिक्वायरमेंट्स हैं. देन वी हैव ड्रम्स, वोकल्स, यूकेलेली इज़ देयर. We have also horns now, trumpet, trombones and saxophones are there, and we have harmonica as well, and we have music theory, popular music theory. It is not the classical music theory, popular music theory. तो उसके बारे में भी हम थोड़ा डिटेल में बाद में बात करेंगे. तो जो हमारा प्रैक्टिकल कंटेम्प्रेरी एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर है वो आपके सामने इस टाइम पे स्क्रीन पे है. दिस बेसिकली let me hide the floating media controls. So this basically is divided into 5 sections. There are 5 different parts of the exam. तो बहुत comprehensive exam structure है ये. So performance takes 60% of the exam weightage, right? And 60% is also the pass mark. So that is how we value performance, is 60% of it. Then we have technical exercises, which is a prepared element of it, which is 15%. So that makes it 75%. और जो remaining 25% test होता है, those are unseen tests. वो आपको पहले से पता नहीं होगा कि क्या पूछेंगे, वो आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा. So that includes sight reading or improvisation,
दिस इज़ अ चॉइस, ठीक है. देर इज़ ईयर टेस्ट्स विच इज़ नॉट अ चॉइस, मैंडेटरी है सबके लिए, सबको करना पड़ता है. एंड जनरल म्यूजिशियनशिप विच इज़ 5% वेटेज. इसमें आपसे सवाल पूछे जाएंगे म्यूज़िक को लेके. वॉट एवर पीस ऑफ म्यूज़िक यू चूज़ टू प्ले, द एग्जामिनर इज गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चंस ऑन दैट म्यूजिक्स बैकग्राउंड and about the piece itself. So they can point at a particular a note, ask you for the note pitch or a note value, time value of the note. They can ask you about the chords or harmonies that you're playing in. So those kind of questions are asked. They can also ask you about the genre. In grade 3 itself, they might ask you what genre is this piece of music from, which is given in the book. I'm going to talk about that. But not only that, they might ask you, can you name 2 other bands in the same genre that you know, right? तो जॉनर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन आपको खोजना पड़ेगा. इतना सिंपल नहीं है कि बस आपने पीस बजाया और सर्टिफिकेट ले लिया. वो चाहते हैं कि आप उस जॉनर के बारे में थोड़ा एक्सप्लोर करें, म्यूज़िक के बारे में थोड़ा एक्सप्लोर करें. इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट पासिंग वन क्वेश्चन पेपर, राइट. ये टेस्ट और इन सब के बारे में मैं एक मॉक टेस्ट आपके सामने करूँगा, अभी मैं एग्ज़ाम वॉक थ्रू करूँगा. सो आई विल गो थ्रू एवरी एलिमेंट ऑफ द एग्ज़ाम फॉर यू इन दिस सेशन. तो आपको एक एग्ज़ाम का फ्लो समझ में आ जाएगा उसका कि हाउ डज़ द एग्ज़ाम एक्चुअली गो, ठीक है. ये जो क्विक स्टडी पीस है, दिस इज़ फॉर ग्रेड 6 to 8 फॉर गिटार बेस एंड ड्रम्स. So GBD, as we call it, guitar, bass and drums, is the backbone of rock school. That's what we started with back in 1991, and the other subjects were added in the course of time. So quick study जो piece होता है, ये basically आपको this includes both sight reading and improvisation. तो उसमें आपको एग्ज़ाम में ही 5 मिनट मिलते हैं एग्जामिनर के सामने. आपको एक स्कोर दिया जाएगा, इसमें पूरा स्कोर नहीं लिखा हुआ है, थोड़ा दिया हुआ है, थोड़ा गायब है. तो द मिसिंग पार्ट यू हैव टू इम्प्रोवाइज एंड द गिवन पार्ट यू हैव टू साइट रीड एंड परफॉर्म अलॉन्ग साइड अ बैकिंग ट्रैक. सो दैट इज कॉल्ड द क्विक स्टडी विच बेसिकली इज एप्लीकेबल फ्रॉम ग्रेड 6, 7 and 8. राइट. सो उन 3 सेक्शन पे दिस इज कॉल्ड द क्विक स्टडी ओनली फॉर द गिटार, बेस एंड ड्रम्स. फॉर अदर सब्जेक्ट्स लाइक पियानो, you have a choice between sight reading and improvisation all the way from grade debut to grade 8. And one very fantastic news we just got yesterday is that now we are offering a premier grade exam for the contemporary piano syllabus. So we have method books for piano which are available on our shop. You can purchase it online, and those books you can use to prepare for a premier grade exam which is below the debut. It is only a performance certificate exam. I'm going to talk about that. Okay. So exam options, public और private centers बाद में डिस्कस करते हैं. ऑनलाइन एग्ज़ाम्स मतलब बेसिकली हमारे पास 2-3 तरीके के एग्ज़ाम्स होते हैं. ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हैं विच इज़ रिकॉर्डेड डिजिटल एग्ज़ाम्स, राइट. सो जो कि आप एक वीडियो रिकॉर्डिंग करके आप अपना एग्ज़ाम को भेजेंगे एग्जामिनर के पास जज करने के लिए. दूसरा है लाइव स्ट्रीम एग्ज़ाम वेयर यू आर लाइव ऑन जूम विद द एग्जामिनर लाइक यू आर विद मी राइट नाउ, and then you perform your exam to the examiner. Real time the examiner is going to relay the information about your sight reading or ear test or general music questions. They will be asked online live by the examiner. The coursework submission is for music production, blogging and podcasting. So इसमें क्या होता है कि you prepare your content before the exam date. तो 60% of the content is actually prepared before the exam date. जब एग्ज़ाम में आप जाएंगे तो उसमें आप थियोरी और लिसनिंग टेस्ट करेंगे और अपना जो पहले का प्रिपेयर्ड जो आपने प्रोजेक्ट बना रखा है उसको आप अपलोड करेंगे. सो इन म्यूजिक कोर्स वर्क यू हैव टू प्रिपेयर योर लाइक यू नो content for the exam before the exam, about 60% of it, and in the exam you do the theory and the listening part and you upload your pre-prepared sections on that. The online exams are available for music theory. We also have the paper theory exams twice a year. तो theory के exams साल में 2 बार paper theory होते हैं, and every month we have online theory exams as well, जिसकी पूरी गाइडेंस आपको ईमेल पे और इलेक्ट्रॉनिकली दी जाएगी. वीडियोस भी हैं उसके लिए, डॉक्यूमेंट्स भी बने हुए हैं. कोई क्वेश्चन हो तो पूछेगा. तो 2 टाइप हैं हमारे एग्ज़ाम्स फॉर्मेट्स के. ये फेस टू फेस और लाइव स्ट्रीम एग्जाम्स में अप्लाई करता है. परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट यू हैव टू प्ले ओनली 5 पीसेस. तो कोई भी आप 5 पीसेस बजा के अपना एग्ज़ाम पूरा कर सकते हैं, ठीक है. द सर्टिफिकेट इज एग्जैक्टली द सेम दैट यू गेट फॉर द ग्रेड म्यूजिक एग्जाम. द ओनली डिफरेंस इज गोइंग टू बी द मार्कशीट. तो जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा बिल्कुल सेम मिलेगा दोनों फॉर्मेट में, मार्कशीट में फ़र्क होएगा. In the mark sheet of the performance certificate exam, it will only talk about the 5 pieces that you presented, whereas in the graded music exam, they will talk about the 3 pieces that you presented, technical exercises, sight reading or interpretation or improvisation, ear test, and
general musicianship questions. In सबके remarks and marks will be there in the mark sheet, not on the certificate. So the certificate will read a certificate for grade 4 in a particular subject presented by so and so, all those things, QCF points and everything. So certificate is exactly the same in the two formats. Only difference is the mark sheet. Okay. Going forward, now what I'll do is I will actually go through a grade 2 exam with you guys right now. Okay. So I'm going to play through the pieces and I'm going to tell you. Yes, Fable, you have a question? Yes, sir. So the previous slide, I could just see the general questions and all under the graded examination. Is this for the offline or for the online? Because, yeah, the digital Online, stage was, yeah. so recorded exam, you will only do the 3 pieces and the technical exercises. The weightage of technical exercises will be 25%, for which reason you have to prepare a lot more technical work than you would typically present in a face-to-face exam. And the requirement of what is the technical work requirement for a recorded video exam is available on our website. You need to go there and download the requirement for your particular subject and make sure that you're meeting the requirement for the grade that you're presenting for. All these 5 elements will come into play for either the live stream exam or a face-to-face exam. Got it. Yeah. Right? Yeah. Thanks. So for the Hindi speakers, जो technical exercises हैं recorded digital exam में वो अलग हैं recorded exam के लिए, because उसमें ये 3 एलिमेंट साइट रीडिंग, एयर टेस्ट और GMQs नहीं आते हैं. तो इसमें टेक्निकल एक्सरसाइजेज का वेटेज बढ़ा के 25% कर दिया गया है. 15 नहीं है, 25% है. तो उसके लिए आपकी जो टेक्निकल एक्सरसाइजेज आपको रिकॉर्ड करनी है उसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है. आपको हमारी वेबसाइट से जाके अपने इंस्ट्रूमेंट के लिए उसको डाउनलोड कर लीजिए. उसमें सारे ग्रेड्स का पूरा डिटेल दिया गया है कि कौन से ग्रेड के लिए आपको कौन से स्केल्स, कितने आर्पेजियोस, क्या क्या टेक्निकल स्टडीज़ आपको प्रिपेयर करनी है, सब कुछ उसमें दिया गया है. सो एट दिस पॉइंट आई विल ओपन what do you call that learning platform, and let me start that. So I am doing a grade 2 exam for contemporary piano, right? Abigail is there in the waiting room. John, are there any questions in the chat that I have not answered? Yes, Hindi please. Okay, Hindi English दोनों ही कर रहे हैं आज हम, ठीक है. So I will share this. So this is what we call the learning platform. You can see it on the top left corner, learning platform, and I'm going to play this song for you from this. I will also have the score open in front of me because it's just easier for me to read from there. Just a minute. So I am playing This Is Me. Okay. So अब मेरे को 3 pieces बजाने हैं. अच्छा, इसमें हमारे पास free choice pieces भी होते हैं. We have a choice of choosing music outside the book as well. When we are doing a grade certificate exam, we need to choose at least 1 piece from the book and 2 pieces can be free choices. ठीक है. So I can choose to play all 3 pieces from the book, or I can choose 1 piece from the book and 2 more pieces which are at par at the grade 2 standards. तो for Hindi speakers, हमें एक गाना बुक से बजाना ज़रूरी है. 2 गाने आपके फ्री चॉइस हो सकते हैं, आप कहीं और से भी ले सकते हैं. तो ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे गाने बुक से ही बजाने हैं. तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ फ्रीडम ऑफ चॉइस. तो मैं क्या कर रहा हूँ अभी, मैं एक पीस कंटेम्प्रेरी पियानो की बुक से बजाऊँगा, एक पीस में क्लासिकल पियानो की बुक से बजाऊँगा, और एक पीस में फ्री चॉइस बजाऊँगा पहले का कहीं का. ठीक है. So 1 piece I'm choosing from the contemporary piano, 1 piece from the classical piano, and 3rd piece I'm going to choose from outside syllabus. Yes, Fable? Sir, when you mean outside of the book, you also mean it should come under the repertoire of RSL, is it? Or no, it doesn't have to be under the repertoire of RSL. You could perhaps choose a grade 2 piece from a Trinity syllabus or LCM syllabus or anything. Or you can just choose a piece of music which you think fits a grade 2 standard, and those standards are defined in something called the free choice pieces criteria document, which is available on our website. Okay, and what about, so I'm talking about music, like the singing bit. So what about instrumental tracks and karaoke tracks? Can it be from YouTube, or it has to be something? They can be from YouTube, not a problem. It can be those from the syncing, channel and all. There are some.
See, and the it's funny, right? copyrights of the track are your problems. So when you're choosing a song outside the syllabus, the copyright for that particular song is not the responsibility of the board. So you can choose it from anywhere you like. And then that we have to provide the score as well, right? Yes, फ्री चॉइस Okay. पीसेस यू हैव टू प्रोवाइड द स्कोर. कोई भी फ्री चॉइस पीसेस के लिए अगर आप चूज़ करते हैं सिलेबस के बाहर का, रॉक स्कूल के बाहर का, तो उसके लिए आपको स्कोर अपना देना पड़ेगा, शीट म्यूजिक आपको बनाना पड़ेगा उसके लिए, या आप कहीं से भी डाउनलोड करके दे सकते हैं. यू कैन गेट द शीट म्यूजिक फ्रॉम एनी वेयर, यू कैन हैंड राइट इट इफ़ यू लाइक, यू कैन परचेज इट ऑनलाइन, यू कैन डू विच एवर वे यू लाइक इट. देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन टू दैट, but sheet music is mandatory for free choice pieces. Okay. All right. Yeah. Okay, so let me just play this song. This is called This Is Me. This is me. 1, 2, 3, 4. Sorry, just to make it slightly more interesting, let me also share my keyboard so you can see my hands, right? Okay. Yeah, there you go. So This is me. 1, 2, 3, 4. When the sharpest words wanna cut me down, I'm gonna stand in front, gonna drown them out. I am brave, I am bruised, I am who I'm meant to be. This is me. And all the bullets hit my skin, but I'll fire away. Constantly, I won't let my shame sink in. We got plastic from the barricades, and ancient doors of your glory. Make me wrong, and break me down. I know that there's a place for peace, for your glory. When the sharpest words wanna cut me down, I'm gonna stand in front, This is me. So what you see here is called the learning platform, where right now you can see on the right side I was using the backing track and I was playing alongside that. Meeting is being recorded. Right. So you can see that I'm using the backing track. I could have used the demo track to just play along with it. I can use a click track where the backing track and the audio is not there at all. And when you have a student sign up with you on this particular platform as a teacher, you can do a lot more with it. You can even take a small section of of the music, and you can say, okay, I'm assigning this to you as a homework, and they can practice it at different speeds, record it. It also has AI built in, which will give you a real-time feedback on how much, what is your accuracy with the pitches and the rhythm. Obviously, it can't judge the expression part of it, but it gives you a it's a good learning tool for you to have. तो लर्निंग प्लेटफॉर्म के बारे में मैं बता रहा था कि इसमें आप बैकिंग ट्रैक्स यूज़ कर सकते हैं, डेमो ट्रैक यूज़ कर सकते हैं, क्लिक ट्रैक यूज़ कर सकते हैं. और इसमें ये भी होता है कि जब आप टीचर हैं और आपके साथ स्टूडेंट साइंड अप है इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो आप कुछ सेक्शन को सिलेक्ट करके उनको होमवर्क भी मार्क कर सकते हो, वो अलग अलग स्पीड पे प्रैक्टिस कर सकते हैं. AI बिल्ट इन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसमें, जो आपके स्टूडेंट को फीडबैक देगा कि उसने अपने पिचेस और रिदम कितना एक्यूरेटली बजाया है. तो एक्सप्रेशन और डायनामिक्स वगैरह को नहीं कर सकता इतना वो, लेकिन एटलीस्ट पिच और रिदम को आपको फीडबैक मिल जाए कि आप कहीं पे गलत तो नहीं बजा रहे. सो वेरी यूजफुल टूल. नाउ आई एम गोइंग टू गो बैक एंड आई एम गोइंग टू पुल आउट अ पीस ऑफ म्यूजिक फ्रॉम द क्लासिकल पियानो सिलेबस. Okay.
और इसमें आपको पूरा ही RSL का पूरा पोर्टफोलियो आपको अवेलेबल हो जाता है. So let's take classical piano grade 2. Okay, I'm going to play a piece called Ashadullah Part. Now ये आपको क्लिक ट्रैक के साथ बजाना ज़रूरी नहीं है. मैं इसको बड़ा कर दूंगा, लेकिन अच्छा मैं इसको यहीं से बजा देता हूँ, देखिए नहीं तो मैं मैच नहीं कर पाऊंगा इसको. ठीक है. हेलो. Yes, Ruben, any questions? यस. हाँ. Yeah. सर मैं ये पूछ रहा था कि अगर हमने एनरोल कर लिया तो स्टूडेंट के लिए और फैकल्टी के लिए दोनों के लिए डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो वेब पोर्टल है वो अवेलेबल हो जाएगा. हाँ जी, देयर इज़ अ स्टूडेंट लॉगिन और टीचर लॉगिन. तो आपके लिए ओके. टीचर के लिए ये बिल्कुल फ्री है. आपको कुछ नहीं करना है, बस टीचर रजिस्टर पे साइन अप करना है. जैसे ही आप रजिस्टर पे साइन अप करेंगे आपको एक्सेस इसका 1 साल के लिए फ्री मिल जाता है. और आपके स्टूडेंट्स को पे करना पड़ेगा, जिसका कॉस्ट अभी £5 है, मतलब ₹500 महीने के आसपास पड़ता है स्टूडेंट के लिए. लेकिन उसमें उनको बुक भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. राइट. तो बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है. अगर आपने लर्निंग प्लेटफॉर्म ले रखा है तो आप इसी को यूज़ करके अपने आईपैड पे आप एग्जाम रूम में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. स्वप्निल, यू हैव ओके. क्वेश्चन. और जो हाँ मतलब टीचर के लिए जो वेब पोर्टल रहेगा उसमें 1 साल के लिए सारे ग्रेड के लिए लर्निंग मॉड्यूल्स अवेलेबल रहेंगे. करेक्ट. सारे लर्निंग मॉड्यूल्स नहीं है, सारा मटेरियल. शीट म्यूजिक एंड ऑडियो. मटेरियल. हाँ, शीट म्यूजिक एंड ऑडियो फॉर ऑल सब्जेक्ट्स एंड ऑल ग्रेड्स विल बी अवेलेबल टू यू ऑन लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर अ ईयर. एंड 1 साल के बाद रिन्यूअल के लिए क्या करना पड़ेगा टीचर को? एक स्टूडेंट साइन अप होना चाहिए आपके पास. ओके. एक भी स्टूडेंट आपके लॉगिन से कनेक्टेड है तो आपका लॉगिन ऑफ नहीं होएगा. ओके सर. ओके, गॉट इट. थैंक यू सर. मोस्ट वेलकम. स्वप्निल. Yeah, sir, I want to ask, like, how the student will get to know that this particular piece has to be performed with the backing track, or this is a solo piece in contemporary piano, because we have 6 pieces, right? Yeah, 6 pieces are there. Is a very good question. 2 out of the 6 pieces are typically solo piano pieces, so those will not have a backing track. So, Right. so when you select a song which does not have a backing track, you will see that the option for the backing track is missing here. Okay. So Now, if somebody doesn't have this LP and just have the book, and someone wants to know if this song has to be performed with the backing track or it is solo performance, then is there any information given somewhere? nahi. The book हाँ, will ये mention it. When you select the audio download, the backing track for those particular songs won't be there. या वो थोड़ा है ना कि सबको बताना पड़ता है कि हाँ यहाँ पे इसका बैकिंग ट्रैक नहीं है, तो दिस मीन्स इट इज अ सोलो परफॉर्मेंस, Correct. राइट? So This Love Yourself from Piano, great debut. So basically, Love Yourself is a contemporary music, basically. Yeah, it's a pop song, but it doesn't have a backing track, right? So Right. you say, yeah, okay. Yeah. So I just like, I was wondering, like, यानी कि कोई information यहाँ पे कोई available है कहीं पे ऐसे, है ना? नहीं, वो अवेलेबल नहीं है. जब आप डाउनलोड करोगे, when you use the code given in the book to download the audio, you will only हाँ, get the audio for the songs that have a backing track. right. बाकी का you will only get the demo track but not the backing track. If the backing track is missing, that means it is a solo piano piece. And even in the Okay. demo track, you will not hear anything else but the piano. So that makes it very obvious. All right. So then I'm on the same page then. No problem. Oh, Yeah. okay. So I'm going to play you this particular piece, and so actually, you know what? It is better to stop share this, and I'll share the sheet music with you. Yeah, you can see this. So I will take the classical piano grade 2 and to that song. So this is the song that I'm playing for you. Okay. Now each of these songs, whether it's contemporary or classical, they have this background information about it. So this is what we call the fact files, where you can read about the track. कि ये गाना क्या है, उसका क्या background है, उसके बारे में पढ़ सकते हैं. So this is composer who is a French national. और जो हमारे composers का selection है वो भी हमारा ना बड़ा inclusive process रहता है. We have composers and performers from all over the world. Even in the classical guitar syllabus, 2 of the classical guitar players from India have recorded on it. Okay, and I have also been one of the consultants for this syllabus for the classical piano.
So Simone is a French national, and this particular piece features in a collection of 20 pieces for children entitled La Chant de la Joue, Songs and Games, composed by Simone. The collection was one of the 2 books that we published for the children, so that gives you background of it, and it's about the pianist as well. Sorry. So it tells you about the, sorry, what did I do? Sorry, did something stupid, 1 minute. So it tells you a background about the composer as well. She was a pianist, composer and teacher, born in southwestern France in 1897, blah, blah, blah. You can read about this. Then there are preparation notes as well. So टीचिंग नोट्स जिसको बोलते हैं कि आप ये पीस सिखाओगे तो आपको किस किस चीज़ का ध्यान रखना है, वो सब चीज़ें भी यहाँ पे दी गई हैं. बाकी एग्ज़ाम बोर्ड्स में क्या करते हैं, एक अलग से बुक पब्लिश करते हैं टीचिंग नोट्स की. यहाँ पे सब कुछ हमारे एक ही बुक के अंदर है. ठीक है, तो let me just read you second para. Much of the left hand consists of diads. Diads are 2-note chords basically, held for the full length of the bar. Once you have learned the finger patterns, focus on ensuring each diad sounds precisely together and evenly balanced. Controlling the balance and tone is important. Ensuring a legato, which is connecting the notes. A light touch is not so heavy as to stop the melody from singing out above. सो एक एक चीज़ फ्रॉम बार वाइज भी उन्होंने दे रखा है. अगेन बार 1722 एक एक चीज़ उन्होंने पूरी डिटेल में यहाँ पे दे रखी है. एंड देन देयर सम परफॉर्मेंस नोट्स अबाउट इट. This pretty piece seems deceptively straightforward, yet is full of technical challenges. For a successful performance, you will need to control the balance of the parts and allow the legato melody to sing out. Modere, in the French term instructing the performer to play at a moderate tempo. Be careful to hold the steady pulse and avoid playing faster than you can, delivering the 16th note passages in a controlled and even way. So there are a lot of performance notes and everything, background information given there. So now I will play you this piece. I am obviously citing this, so hopefully it should go well. 1 minute. Okay, I'll just play this. Ritesh, Yes. can you show your keyboard? Oh, okay. 1 second. Yeah. Can you see? Okay. It may not be precisely coordinated, but mostly it will be. अब ये क्लासिकल पियानो की मैंने बुक से पीस लिया है, ये RSL की पब्लिकेशन है, तो इसके लिए आपको बैकग्राउंड ये स्कोर देने की ज़रूरत नहीं है. जब आप इफ़ यू आर रिकॉर्डिंग द एग्ज़ाम, यू डोंट नीड टू गिव द स्कोर फॉर दिस पर्टिकुलर पीस बिकॉज इट इज़ पब्लिश्ड बाय RSL. Okay. Now the third piece that I'm choosing is also a grade 2 Rockschool piece, but this is from the very old 2001 syllabus, which you may not have, but you can always ask for it. So I'm playing this song called Girl from Crow Creek. This was published in 2001. It's a beautiful piece. I've been teaching it for many years now. तो ये मेरा थर्ड पीस है. इसके लिए मेरे को स्कोर देना पड़ेगा बिकॉज ये करंट पब्लिकेशंस में नहीं है किसी भी RSL की. बहुत पुरानी पब्लिकेशन का पीस है, तो इसके लिए मेरे को स्कोर फ्री चॉइस के लिए देना पड़ेगा. दिस इज़ इन 3/4. इट्स अ वेरी फन पीस टू प्ले. आई जस्ट प्ले दिस नाउ. वी हैव
आपने देखा कि मैंने क्लासिकल पियानो का भी बजाया, कंटेम्प्रेरी का भी बजाया और एक आउटसाइड सिलेबस भी बजाया, लेकिन जो आपको सारा टेक्निकल वर्क और बाकी चीज़ें आपको प्रेजेंट करनी पड़ेंगी वो आपको कंटेम्प्रेरी पियानो के सिलेबस से ही करनी पड़ेंगी, क्योंकि दैट इज़ द मेन सिलेबस दैट यू चोजन टू एग्जामिन इन. So you need to present all your scales and arpeggios and everything from the contemporary piano syllabus, not from the classical, not from anywhere else. Okay, so this is your main syllabus. तो आपको इसी में से आपका सारा technical work वगैरह present करना है. So just to show you, let me just see if I have it somewhere. So I'm going to just show you briefly. The document which you need to download from online. Okay, तो ये वो डॉक्यूमेंट है जो आपको हमारी वेबसाइट पे rslawards.com पे जाके मिल जाएगा. आपको सर्च में डालना है रिकॉर्डेड एग्जाम टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स एंड यू विल फाइंड इट. पेजेस आ जाएंगे सर्च में, आराम से आप ढूंढ सकते हैं उसको. ये पियानो सिलेबस का डेब्यू टू ग्रेडेड का रिकॉर्डेड एग्जाम के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो है. दिस इज़ फॉर द रिकॉर्डेड डिजिटल एग्जाम्स. ओके, तो लेट्स गो टू ग्रेड 2. अगर मैं ग्रेड 2 रिकॉर्डेड एग्जाम कर रहा हूँ तो मेरे को ये सारे स्केल्स बजाने हैं. देयर आर 12 स्केल्स दैट आई विल नीड टू प्ले. ओके, ग्रुप बी में मेरे को 6 आर्पेजियोस बजाने हैं. ग्रुप सी मेरे को 3 क्वार्ड वॉइसेस बजानी है. ओके, सो आई विल हैव टू प्ले ऑल ऑफ दिस फॉर अ रिकॉर्डेड डिजिटल एग्जाम. For a live exam, the examiner might just ask me 2 or 3 scales from this, maybe 2 arpeggios from this, maybe all the voicings he might ask, but he will not ask me to play through everything. But because the weightage is more, you have to play through every single thing given in the book for this. Okay, so please be mindful to download this document from the internet if you're preparing your students for digital exams. अगर आप digital exams के लिए अपने बच्चों को prepare कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि ये आपको ऑनलाइन डाउनलोड करनी है ताकि आपको कुछ. Right. So now I'll go to the scales and arpeggios of grade 2. अच्छा, इसमें grade 2 का है तो मतलब आपको 2 sharps और 2 flats में ही सब कुछ पूछा जाएगा. So because it is grade 2, all your scales and arpeggios and technical work is in 2 sharps or 2 flats. Alright? This goes up to grade 7 actually. So grade 7 you have 7 sharps, 7 flats. Grade 8 it's a mix of lot of things. So they will give you the tempo at 66. When you're doing the contemporary piano exam, you have to play with the click. So I will set up my click and set it to 66. 66 से ऊपर करना चाहो और बहुत कंफर्टेबल हो तो कर सकते हो, लेकिन 66 इज़ द मिनिमम रिक्वायरमेंट, तो उससे नीचे आपको नहीं करना चाहिए. एंड इसमें लिखा हुआ है क्वेवर्स में, मतलब 2 notes to a click you are going to play. So that is the requirement. So let me just play you maybe 1 or 2 scales. So B flat major, I will play 2 octaves. बहुत कंफर्टेबल स्पीड दिया गया है ग्रेड 2 के लिए. there is a natural minor as well. If you look at number 4 given at the bottom of the page, you have B natural minor, which is not something that you typically encounter in classical music syllabus. Classical music में आपको harmonic और melodic ही करवाते हैं, इसमें natural minor B आएगा. So I'll just play that for you, maybe a little faster. So I did not raise the 7th note. I did not do. Okay, तो harmonic minor नहीं है, natural minor है. Then you have scales like the pentatonic scale. So I'll just play you the B flat major, pentatonic. Fingerings are suggestions only, you can do what you like. Minor pentatonics are there. Let me play you G minor pentatonic. So this is right hand only, because जब आप contemporary music में solos बजाते हैं तो typically right hand solo बजाता है, left hand नहीं बजाता है, तो उन्होंने ज़्यादा scales के requirements right hand के लिए रखे हैं, left के लिए कम है. Then you have the C blues scale for right hand and for left hand. Let me play it for the left hand.
ऐसे ही आपके लिए आर्पेजेस भी हैं. आर्पेजेस स्पीड थोड़ी सी कम है, 63 कर दी है इन्होंने. और मैं डी मेजर बजाता हूँ आपके लिए. आर्पेज कैसे बजेगा, हैंड्स टुगेदर बजेगा सारा ये. तो सारा ऑब्वियस है क्या है इसमें. Chord voicings is something different, and this is to be played from memory. In the exam, you will be asked to play one of the 7th chord exercises below from memory. This test is performed in free time, so there is no click. मेट्रोनोम के साथ नहीं बजाना है, फ्री टाइम में है ये. और ये आपको मेमोरी से बजाना है. इन तीनों में से कोई भी एक्सरसाइज आपसे पूछी जा सकती है, आपको वो बजाना है. ये है क्या, ये बेसिकली 7th chord जो होता है, सी मेजर 7, उसकी वॉइसिंग्स दी गई हैं कि वो सेम कॉर्ड को किस किस तरीके से कीबोर्ड पे बजाया जा सकता है. नाउ एग्जाम पर्पज से तो जो दिया गया है वही आपको करना है, लेकिन अगर आपने सिखाने के पर्पज से देख रहे हैं तो आप इसी को अलग कॉर्ड्स पे भी अप्लाई करके बच्चे को सिखा सकते हो कि डी मेजर 7 कैसे बजेगा, या बी फ्लैट मेजर 7 कैसे बजेगा. दिस इज़ अ वेरी गुड लर्निंग टूल. देयर आर 3 डिफरेंट वॉइसिंग्स गिवन हियर, मेजर 7th, माइनर 7th एंड द डिमिनिश्ड 7th. सो लेट मी टेक द माइनर 7th कॉर्ड एंड आई विल शो यू व्हाट द वॉइसिंग इज गिवन. तीन वॉइसिंग्स दी गई हैं माइनर 7 कॉर्ड की. पहला तो रूट पोजीशन में ही है. फिर आप सिखा सकते हैं कि ई फ्लैट मेजर इन फर्स्ट इन्वर्जन ऑन द राइट हैंड विद द सी इन द बॉटम. देन द फर्स्ट इन्वर्जन इज गिवन देयर. सेम नोट्स को अलग तरीके से अरेंज किया गया है. सो दिस इज अवेलेबल. दिस इज पार्ट ऑफ योर टेक्निकल वर्क एक्सरसाइजेस. Then you have sight reading. So let me stop this and I'll go back to the learning platform and show you the sight reading part of it. So let me contemporary piano, Rockschool piano grade 2. So I will go to ये सारी technical exercises. You have the click tracks with that you can use in the exam. अगर आप लर्निंग प्लेटफॉर्म यूज़ करें तो यहीं से आप बजा सकते हैं. जैसे आपको डी मेजर स्केल बजाना है तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ डेमो यू जस्ट क्लिक ऑन क्लिक ट्रैक एंड स्टार्ट प्ले एंड इट काउंट यू. सॉरी, इट जस्ट स्टार्टेड. Play it with the track, but you can have it open if you like. ठीक है. Let's sight reading. So I am going to play an example. Sight reading में क्या है different कि classical piano में backing track नहीं होता है, इसमें backing track भी है. So in the classical piano typically you don't have a backing track for sight reading. In this particular contemporary piano syllabus there is going to be a backing track with it. So this is in 2 flats, that's a B flat major, and I'm going to just sight read this thing with the backing track. So I don't want the demo audio, I'll select the backing track and I can, in the exam obviously the examiner is going to play the backing track for you because the example is going to be brand new. It is not going to be what is in the book, but for example this one I'll just play it for you. 1, 2, 3, 4. Sight read that. Okay. Then we have the ear tests, and I'll just play one. Oh, sorry. I will read about the ear test from the iPad, and I'll talk about this here. Oh, actually, it's given there. Ear test, so you can read this. So the melodic recall, the examiner will play you a 2-bar diatonic melody in the key of C major with a range of up to a 4th. Alright? So C major की की में diatonic माने स्केल के बाहर कोई नोट नहीं होंगे. C major स्केल से ही नोट्स लिए जाएंगे. The first note will be the root note. C note पे ही शुरू होएगा. You will hear the test twice, each time with 1 bar count in. Then you will hear a further 1 beat count in, after which you need to play the melody back with a click. The other one is the chord recognition, where the examiner will play you a sequence of chords. C is the root position. You will hear the chord sequence twice, each time with a 1 bar count in. तो आपको chord sequence सुनाई देगी. सारे C पे ही बज रहे हैं. C ही root note है.
You will then be asked to identify the chord quality of each chord from the choice of major, minor, diminished, augmented, and dominant seventh. Okay, and you can try it out with it. So let me just show you how we do this. So let me take the melody. So I'm going to do this one. Oh, sorry, this is the improvisation. We'll get to that. Here it is, melodic recall. So this is giving you this C note. So you can try it out if you like. You know what it is. You can do this in the exam. So you can practice. Now you get the time to practice if you like to check. This gives you plenty of time to figure it out actually. And then it will give you a click track for which you have to play it. That's it. Pretty simple stuff, right? Next we go to the melodic recall test 2, chord recognition. So this is going to play some chords starting on the C note. So you can try out the chords if you like. Yeah. So I can figure out. So then the examiner will ask you to play it back, and you will play the C major, C minor, C dominant 7, and the C major again. So those kind of things will be expected. So chord knowledge ज़रूरी है. थियोरी उसके साथ साथ जाएगी. जो हमारा पॉपुलर म्यूज़िक थियोरी का सिलेबस है बहुत यूज़फुल है, उसको प्लीज़ चेकआउट कीजिएगा. बहुत हेल्प करता है वो एग्ज़ाम में. जनरल म्यूज़िक क्वेश्चंस में भी हेल्प करेगा आपको. जनरल म्यूज़िक क्वेश्चंस में भी हेल्प करेगा. ये टेस्ट में भी हेल्प करेगा. इम्प्रोविजेशन में भी हेल्प करेगा. उसके बिना बहुत मुश्किल हो जाता है. Improvisation, बताता हूँ. In the improvisation test, the examiner will give you 4 to 6 bar chord progression in the key of D major or B flat major, which is 2 sharps or 2 flats. तो D major, B flat major में आपको 4 से 6 बार का chord progression दिया जाएगा. You will first be given 90 seconds. आपको 90 सेकंड 1.5 मिनट मिलेगा आपको प्रैक्टिस करने के लिए. उसके बाद बैकिंग ट्रैक आपके लिए 2 बार बजेगा. पहली बार इट इज़ ओनली फॉर योर प्रैक्टिस. सेकंड टाइम इज़ व्हेन यू एक्चुअली परफॉर्म इट. ठीक है. ईच प्ले थ्रू द बैकिंग ट्रैक विल बिगिन विद 1 बार काउंटिंग. तो 1 2 3 4 बोल के ट्रैक शुरू होएगा हमेशा. टेम्पो रेंज 60 to 95 रहेगा. ड्यूरिंग दिस टाइम यू विल बी गिवन अ चॉइस ऑफ अ मेट्रोनोम क्लिक थ्रू आउट 1 बार काउंटिंग एट द बिगनिंग. द बैकिंग ट्रैक इज़ कंटिन्यूस. सो ये बैकिंग ट्रैक जो होता है बीच में रुकता नहीं है. कई लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि पहले बजेगा, फिर आपको 90 सेकंड में गैप मिलेगा, फिर बजेगा, आपको परफॉर्म करना है. वो चीज़ हो जाती है. यू आर ओनली रिक्वायर्ड टू इम्प्रोवाइज सिंगल नोट मेलोडीज. आपको सिर्फ मेलोडी बजानी है. लेफ्ट हैंड परमिसेबल है, बजा सकते हो, लेकिन उसको जज नहीं किया जाएगा. आप राइट हैंड पे जो बजा रहे हैं उसी को जज किया जाएगा. लेफ्ट हैंड आई थिंक कम्स इन टू प्ले एट ग्रेड 4 लेवल. ओके, सो आई कैन गो बैक एंड नाउ डू द इम्प्रोवाइजेशन. लेट मी टेक डी मेजर. ओके, कॉर्ड्स आप देख रहे हैं मेजर 7 माइनर 7 आ गए हैं ऑलरेडी. हाँ, सो आई जस्ट इम्प्रोवाइज वन. पता नहीं था किस स्टाइल में बजेगा, एकदम से बज गया. बट यू गॉट द आइडिया. यू कैन इम्प्रोवाइज ओवर दैट. ठीक है. इम्प्रोवाइजेशन के बाद आपका टेक्निकल वर्क कवर हो गया. इम्प्रोवाइजेशन, साइट रीडिंग, ये टेस्ट. सो अब बचा है जनरल म्यूजिशियनशिप क्वेश्चंस. इसमें 5 कैटेगरी के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं. पहला क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन द हार्मनी फ्रॉम अ सेक्शन ऑफ वन ऑफ योर पीसेस. आपको कोई भी पीस उठा के आपसे पूछ सकते हैं यहाँ पे कौन सा कॉर्ड बज रहा है या यहाँ पे कौन सा कॉर्ड बज रहा है. तो हार्मनी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा. सेकंड विल बी रिलेटिंग टू द मेलोडी सेक्शन ऑफ द वन ऑफ योर पीसेस, जिसमें आपको मेलोडी का नोट पूछ सकते हैं, मेलोडी की शेप भी पूछ सकते हैं, रिदम्स के बारे में पूछ सकते हैं, टाइम वैल्यू पूछ सकते हैं कि डॉटेड रिदम यूज़ हो रहा है, ट्रिपलेट कहीं पे यूज़ हो रही है, उस टाइप से. देन क्वेश्चंस रिलेटिंग टू द टेक्निकल रिक्वायरमेंट ऑफ वन ऑफ योर पीसेस. टेक्निकल रिक्वायरमेंट माने कि आप कोई पीस बजा रहे हैं जिसमें आपको आरपेजियो यूज़ करना पड़ रहा है, ये ब्रोकन कॉर्ड यूज़ करना पड़ रहा है, ये स्केलिक पैसेज है, ये 16th नोट के है. तो यू कैन हाईलाइट एनी वन टेक्निकल रिक्वायरमेंट विच यू फील इज़ नेसेसरी फॉर प्लेइंग दैट पीस इफेक्टिवली.
And lastly, you'll be asked one question about the genre. Okay, so this type of questions, and the syllabus booklet has more detail about this than you can see here. Okay. सिलेबस बुकलेट में आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जनरल क्वेश्चंस को लेके, तो वहाँ पे भी आप रेफर कर सकते हैं. सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द वॉक थ्रू. आई थिंक इससे आपको अच्छा आइडिया लग गया होगा कि एग्ज़ाम में क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी और कैसे उसको प्रिपेयर करना है. रिकॉर्डेड एग्जाम के लिए इट इज़ मैंडेटरी दैट इट हैज़ टू बी ए वन सिंगल शॉर्ट रिकॉर्डिंग. टेक्निकल वर्क और पीसेस एक साथ ही बजेंगे. ये तो आप तीनों पीसेस बजाएंगे या टेक्निकल वर्क बजाएंगे पहले. ये नहीं होना चाहिए कि आपने एक पीस बजाया फिर टेक्निकल वर्क बजाया फिर दो पीसेस बजा रहे हैं, उस ऑर्डर में नहीं चलेगा. पहले आप आइडियली पीसेस बजाएंगे फिर टेक्निकल वर्क और वो सब चीज़ें, लेकिन रिकॉर्डिंग कंटिन्यूस रहेगी, बीच में एडिट नहीं करना है, उसको ब्रेक नहीं करना है. ठीक है. सम क्वेश्चंस ऑन द चैट. It is Yes, Ritesh. Yeah. it is mentioned anywhere about only right hand being judged till grade 3. Yes, in the improvisation section it will read in the description. So let me open something else. Let me take a classical piano, say Rockschool piano grade 4, and when you go to the improvisation section, so here it will show you, it will tell you you will need to improvise diatonic single note melodies with right hand and chords in the left hand. So it is mentioned that there are chords in the left hand here. Okay, so the grade book will have that. Okay, so let me stop here. Wow, it is Zoom is asking to confirm my speaking language is English or Hindi. We are confused ourselves. Okay, so There's one more question. please. What is the question? Please, can you give us a complete mention of how a recorded exam works? As Okay. in what all the student needs to mention how to start. Okay, in the beginning you will need, there's in fact a demo video of me recording an exam on the Rockschool India channel. So you can just go to Rockschool India and you will find that video where I've spoken my name, my age and the subject and the instrument that I'm going for, the grade, and then I start playing it. And the requirements are also mentioned in the recorded exam guidelines which are available on our website. So please download the document, read through it. Let me tell you something. If you get something wrong, suppose there is an edit or somebody else has walked into the frame, there's only one operator of the camera and the student or the candidate allowed in the recording room. If the third person walks into the middle of the video, that will be not considered. That will be like basically you have breached the requirements and you will have to resubmit. Resubmit cost is 75% of the exam's fee. So please read your requirements very carefully. Let me repeat this in Hindi. अगर आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उसके रिक्वायरमेंट्स हमारी वेबसाइट के डॉक्यूमेंट में क्लियरली मेंशन्ड हैं, लेकिन अगर आपने वो फॉलो नहीं की और वो रिजेक्ट हो गया आपका वीडियो, तो आपको रीसबमिट करना पड़ेगा वीडियो, जिसकी कॉस्ट आपकी 75% ऑफ योर एग्ज़ाम फ़ी है. तो अगर आपका एग्ज़ाम की फ़ीस 10,000 है तो आपको 7,500 रुपये दोबारा जमा करने पड़ेंगे उसको दोबारा सबमिट करने के लिए. तो प्लीज़ उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको डाउनलोड करके ठीक से पढ़िएगा. रिकॉर्डिंग रूम के अंदर सिर्फ स्टूडेंट और एक कैमरा ऑपरेटर अलाउड है, टीचर अलाउड नहीं है, कोई सपोर्ट बीच में नहीं मिलना चाहिए. तो ऐसे वीडियोस रिजेक्ट हो जाते हैं, उनके लिए आपको बहुत कॉस्ट पड़ेगी. तो प्लीज़ इसको रिक्वायरमेंट्स डाउनलोड करके ठीक से पढ़ लीजिएगा. Changing the key of the song, is it necessary to mention that in the video before the piece? No, it is not. Ariel, if you are recording a song which is in a different key than the original, you don't need to mention it. The backing track obviously has to be in the same key. You can do that, not a worry. And you have to only submit the score if the backing track is already recorded on the track. ये थोड़ा ड्रमर्स के लिए थोड़ा सा अलग हो जाता है, क्योंकि ड्रमर्स क्या करते हैं, वो हेडफोन पे अपना ट्रैक लगा के बजाते हैं और बाद में एग्जामिनर उनके लिए वहाँ पे वीडियो ऑडियो लेयर करता है. लेकिन अगर आपका बैकिंग ट्रैक वीडियो में अवेलेबल है, सुनाई दे रहा है ठीक से, तो आपको बैकिंग ट्रैक अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ स्कोर अपलोड करना है, विच कैन बी इन एनी की. अगर आप डी मेजर में गा रहे हो और आपका स्कोर सी में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें. Video recorded exams have two categories, right? Graded and performance. Yes. Recorded video exams also have two categories. Performance certificate, जिसमें आपको 5 गाने रिकॉर्ड करने हैं, and we have the graded music exams, which is 3 pieces, and the technical work. So digital exams में भी 2 कैटेगरी हैं.
we were not able to upload exam recording from our side. We booked the exam for the student, but the student was able to do the same. Can you kindly walk through on the site on what should we do to upload the exam from the academy teacher's account? Okay, जब आप एग्जाम के लिए साइन अप कर रहे हैं, when you are signing up for the exam, there is a place where they ask you for the candidate's email ID. Instead of candidate's email, if you put your email ID, the exam will be uploaded from your portal. If you put the candidate's email ID, the candidate will get the access to the upload. If you want to upload the video for your candidate and he has signed up with his email ID, you can just ask for his credentials. You can take his email ID and the password, log in into his account and upload the video for him or her if you prefer. That is not a problem. Sir, I have a question. Ritesh Patil here. हाँ जी बोलिए. So, like, just an example, in debut guitar, Once again, sorry, I lost your audio for a second. 12 Once again, songs. sorry, I lost your audio for a second. So, Sorry, I lost okay, your audio. can I repeat? Yeah, please. Okay. So this is Ritesh from Mumbai. So I have a question that we have 12 songs in debut guitar, electric guitar, 6 from hit tunes and 6 from original Rockschool originals. So do we have to prepare 2 songs from hit tunes and 1 original? Is that right? No, you can prepare any 3 songs. You can do 3 originals, you can do 3 hit tunes, you can do a mix of the 2 anyway. You can do 1 Rockschool original and 2 free choice pieces if you like from outside the book. Not a problem. Any 3 songs. Any 3 songs. At least 1 has to be from that book. Any of those 12 songs could be that 1 song. That is Okay. absolutely fine. Thank you. And second question is about scales and chords. Are they going to ask from book only or just like example you shown? Any example? They will ask from the book only. Book only. Yes. Okay, Even if thank you're you, doing the sir. recorded video exam, all the requirements are from the book only. It's just that you have to record all the scales and arpeggios for recorded exam. Whereas Okay. for a face-to-face exam, they might ask you few of those scales and not all of them. Okay. Okay. I'm talking about only face to face. Face-to-face, Offline. the examiner will ask you questions from the book. So scales, arpeggios, जो भी पूछा जाएगा, that will हाँ. all be from the book. Okay. So last question. Can you tell me about the submission date and exams of the date of the exams? So the face-to-face closing date is around 15th of April for the first session and 7th September for the second session. The exams happen around May, June, July for the first session and November, December for the second session. So the last date is the hard closing date. 15 तारीख को closing date है और आपने 16 को अपनी entry भेजी, तो good chance we will not be able to take it. Okay. So 15 April is the last submission date. Absolute last submission date for face-to-face. Face to face. Okay. And the exams are in May or June, right? May, June, July, depending on the May, June, region. Yeah. All over India, May, June, July में होते हैं exam, depending on the region. The examiners might be in Mumbai in the month of June or July. If they like swimming, they might be there in June. ठीक है? Okay. Thank you so much, sir. Most welcome. रिद्धि सर एक क्वेश्चन है हाँ जी. सर मेरे पास जो स्टूडेंट्स एग्जाम दिलाते हैं ना उनके पेरेंट्स मुझसे पूछ रहे थे आफ्टर 8 गेट कंप्लीट होने के बाद में जो उनको आगे की पढ़ाई करनी है तो उसके लिए उनको फॉरेन जाना पड़ेगा कि इंडिया में वो सिलेबस अवेलेबल है. डिप्लोमाज अवेलेबल हैं, इंडिया में कर सकते हो. लेवल 4 और लेवल 6 के डिप्लोमाज अवेलेबल हैं. जी. परफॉर्मेंस और में जैसे- है, क्रिएटिव एंटरप्राइज में है, मतलब म्यूजिक बिजनेस में भी है और टीचिंग में भी है. 3 पाथवेज में आपके डिप्लोमाज यहाँ पे अवेलेबल है. ओके. जैसे इसमें स्कॉलरशिप पे कोई वो है क्या सर, क्राइटेरिया है क्या? जैसे बच्चा अगर अच्छा स्कोर करता है किसी ग्रेड्स के बाद में लाइक 5, 6, 7, 8 के बाद में उसको स्कॉलरशिप मिल रही है तो वहाँ पे डिस्काउंट, अगर सपोज वो चाहता है कि फॉरेन जाके पढ़ाई करना, आगे स्टडी करना चाहता है तो कुछ ऐसा? स्कॉलरशिप आपको कॉलेज और यूनिवर्सिटी देगी, हमारा एग्जाम बोर्ड नहीं देगा. तो जिस कॉलेज अच्छा. में आप अप्लाई करेंगे वहाँ से आप स्कॉलरशिप के लिए ट्राई करेंगे. तो स्कॉलरशिप मिले हैं, मेरे खुद के स्टूडेंट्स को मिले हैं जो ग्रेजुएट यहाँ से रॉक स्कूल करके गए हैं, बर्कली कॉलेज ऑफ म्यूजिक गए हैं, इताका गए हैं. वो बेसिकली वहाँ पे उनको स्कॉलरशिप मिली है. The scholarship is because of the level of achievement. It is not because you have done a particular grade from particular exam board. वो आपके लेवल पे बेस होती है स्कॉलरशिप, आपके सर्टिफिकेट पे बेस नहीं होती है. ओके. जैसे बच्चे ने अगर 6 to 8 कंप्लीटली डिस्टेंशन लेके आया है तो हाँ जी. चांसेस है उसको मिल सकते हैं? करेक्ट. ठीक है. Abigail has asked a question. Are there any additional resources for practicing sight reading, interpretation, melodic studies, improvisation? Yes,
there is a companion guide for vocals which is available with us. So just drop us, you can connect with John and he'll help you out with that, or you can connect with me on the email. You can write an email for any resources to india@rslawards.com, and we will be happy to help you out with anything that you need. Okay. Abigail has already asked for another question earlier. Okay, what was that? For online exams, when a student is changing the key of the song, is it I necessary to mention that in the video before singing the piece? I answered that, so you don't have to mention the key. You can, your score could be in a different key, you could be recording in a different key. As long as the backing track is in the same key as you're singing, you're fine. Key is not to be mentioned as such. Romans Philip? Yeah. Okay. So quickly, these are all the subjects that we do. I would just want to talk briefly about the theory of music. So theory of music, this exam, our syllabus is divided into 4 sections. The music notation part of it is only 20%. This is the thing that typically musicians are scared of. So it is only 20% of it. ठीक है, तो शीट म्यूजिक पार्ट सिर्फ 20% उसका वो है वेटेज, बाकी चीज़ें सिर्फ शीट म्यूजिक बेस्ड नहीं है. पॉपुलर म्यूजिक हार्मनी जिसमें कॉर्ड्स, इंटरवल, स्केल्स, मोड्स, वो सब चीज़ें आती हैं, वो प्रोग्रेशंस वगैरह भी आती हैं, वो 25% वेटेज है. बैंड नॉलेज 25% वेटेज है, जिसमें आपको स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में लिखना पढ़ना भी सिखाया जाता है, उनकी टेक्निक्स भी सिखाई जाती हैं. और फिर आपका बैंड एनालिसिस है विच इज़ 30%. इसमें आपको एक बैंड का स्कोर दिया जाएगा, उसके बेस पे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे विच कैन लीड टू द म्यूजिक नोटेशन, हार्मनी, बैंड नॉलेज और एनीथिंग, और अरेंजिंग फॉर दैट मैटर. We have 2 books. One is from grade debut to grade 5. The second is from 6 to 8. These are called the guidebooks for theory. Very useful books. They look very non-serious. They look very colorful and fun books to actually use. But they literally contain all the information that you will need to do this. Additionally, मैंने पैंडमिक में वीडियोस किए थे ग्रेड डेब्यू से ग्रेड 8 तक की थ्योरी के, जिसमें मैंने एक एक बुक को पूरे डिटेल में एक्सप्लेन किया है. ये सारे वीडियोस हमारे रॉक स्कूल इंडिया चैनल पे हैं, आप वहाँ पे जाके उससे भी पढ़ सकते हैं. All the videos that I have done from grade debut to grade 8 theory are already on our Rockschool India website, on the YouTube channel. So you can go and refer to those videos for your learning. And then we have the music production. So if anybody has any particular questions about music production or theory, you can ask. किसी कोई सवाल हैं प्रोडक्शन थियोरी को लेके तो आप पूछ सकते हैं. तो I think we are almost at the end of the session. Any questions? सर जैसे कोई बच्चा चाहता है करना कि वो म्यूजिक प्रोडक्शन करना चाहता है, जैसे फर्स्ट या सेकंड में, एक हमें आइडिया नहीं उसको कैसे टीचिंग करना है, तो कैसे उसको मतलब इनरोलमेंट करवाएंगे, क्या प्रोसेस रहेगा, क्या हम सिखाएंगे उनको, क्योंकि हमें आइडिया नहीं है. इसकी बुक्स हैं हमारे पास, डिजिटल बुक्स भी हैं, इसकी हार्ड कॉपीज़ भी हैं. तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप पहले बुक ले लीजिए. तो बुक से आपको सब आइडिया लग जाएगा, बहुत डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है उसमें. मतलब हिस्टोरिकल गैजेट्स को लेके डैट क्या होता था और कैसे रिकॉर्डिंग शुरू हुई, वहाँ से शुरू करके आपके डॉज कौन से अवेलेबल हैं. कोई भी डॉ यूज़ करके, चाहे वो लॉजिक यूज़ कर रहे हैं, चाहे प्रो टूल्स यूज़ कर रहे हो, कुछ भी यूज़ करके आप ये एग्ज़ाम्स कर सकते हैं. कोई DAW स्पेसिफिक सिलेबस नहीं है, और बहुत सारी डिटेल बुक्स के अंदर दी गई है. मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा एक बार बुक पहले देख लीजिए, उसमें अगर आपको उसको बाद भी अगर आपको डाउट्स हैं तो आप पूछिए. हमारे पास एक म्यूज़िक प्रोडक्शन के कंसल्टेंट भी हैं, सिद्धार्थ शर्मा, तो उन्होंने पहले वर्कशॉप्स भी किए हैं, सेमिनार्स भी किए हैं, जो कि ऑलरेडी ऑनलाइन हैं. वो भी आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे. उसमें ना सर वॉइस थोड़ी सी ना, सर की सिद्धार्थ सर मैंने अटेंड किया था क्लासेस उनकी, लास्ट ईयर ही किया था, तो उसमें ना वॉइस कम आ रही है सर, बहुत ज्यादा, बहुत लैग हो जाती है, तो समझ में नहीं आती सर क्या बता रहे हैं. मैंने कोशिश किया था बहुत बार कि ना समझ सकूं, बीच में उनकी वॉइस बहुत कम हो जाती है, तो वो हमें सुनाई नहीं देती है, तो डिटेल समझ में नहीं आता कि क्या बता रहे हैं. मैंने सुना है. तो आप जॉन सर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ही विल सेट अप अनदर सेशन विद हिम, है ना, क्योंकि वो डिटेल में तो पूरा तो वही बताएंगे, क्योंकि कंसल्टेंट वही है उस चीज़ के. लेकिन जॉन, यू कैन सेट अप अ सेशन विद सिद्धार्थ शर्मा अगेन ऑन म्यूजिक प्रोडक्शन, सो दे कैन आस्क देयर, थ्रैश आउट देयर डाउट्स अगेन. ओके सर, इसकी जो एग्जाम्स होंगे म्यूजिक प्रोडक्शन की, फेस टू फेस है कि हमें ऑनलाइन रिकॉर्डेड? ऑनलाइन है. तो ये जो आपको कोर्स वर्क टास्क दिया गया है, 60% जिसकी वेटेज दी गई है, ये आप एग्जाम से पहले प्रिपेयर करेंगे. यू विल प्रिपेयर दिस बिफोर द एग्जाम. द 60% वेटेज of the professional scenario has to be done before the exam. In the exam, you will upload the bounce of the audio wave file,
एंड द स्क्रीनशॉट्स ऑफ योर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट. जैसे जैसे आपने प्रोजेक्ट बनाया है वो अलग अलग स्टेजेस पे उसके स्क्रीनशॉट सेव करने हैं आपको. और जब ऑडियो आप वो सारा खत्म हो जाएगा प्रोजेक्ट, जो उसका ऑडियो बाउंस होगा वो, ये स्क्रीनशॉट्स एंड ऑडियो नीड्स टू बी अपलोडेड इन द एग्जाम. एंड देन यू डू द थियरी एंड द लिसनिंग टेस्ट ऑन द ऑनलाइन एग्जाम देयर एंड देन. ठीक है. तो ये कोर्स वर्क टास्क यू डोंट हैव टू डू इन द एग्जाम. लेट मी बी वेरी क्लियर. प्रैक्टिकल ये कोर्स वर्क टास्क 60% वेटेज एग्जाम में नहीं करना है, एग्जाम से पहले करना है. एग्जाम्स. और उसके स्क्रीनशॉट्स आपको सेव करके रखने हैं, ऑडियो सेव करके रखना है, जो कि आप एग्जाम में अपलोड करेंगे. जी. ठीक है. इन द एग्जाम यू विल ओनली डू द थियरी पार्ट एंड द लिसनिंग पार्ट. ओके. एंड दिस इज एन ऑनलाइन एग्जाम ओनली. देयर इज नो फिजिकल एग्जाम फॉर दिस नाउ. और थ्योरी की जो एग्जाम्स होंगी वो भी ऑनलाइन ही रहेगी? ऑनलाइन भी होंगे, ऑफलाइन भी हो रहे हैं. देयर आर ट्वाइस अ ईयर पेपर थ्योरी होता है. तो यू कैन डू अ फिजिकल पेपर थ्योरी एग्जाम ट्वाइस इन अ ईयर, एंड you can do once a month online digital exams for theory, which will include how to write music. There are support videos available for it, there are documents available for it, everything is available. Okay. When you enroll for the theory exam, you will get an email from us. There are links to all those support things there, so please read that email carefully. Everything is given there. Okay sir, thank you sir. Any more questions? Where could we find the wider repertoire for keys and electric guitar? There is no wider repertoire for keys and electric guitar. Wider repertoire is only for the vocals, but you can pick and choose music from outside the syllabus if you like. There is a free choice pieces criteria available on our website, which you can download and refer to that criteria when you are choosing song from outside this. How are the exam certificates credited for all the grades starting from debut, and will they be applicable to submit to different universities over? Yes. So yes, all the certificates are accredited from the Ofqual, right? Same as Trinity and the other accreditation authorities. We give you a printout of a digital certificate. So there is a QR code on it. So when you submit your certificate to a university, they can just scan the QR code and check the validity of that certificate. So they will not have to indulge in long procedures to validate the certificate itself. ठीक है. सो जब हमारे सर्टिफिकेट्स होते हैं उस पर QR कोड प्रिंटेड रहता है, जिससे कोई भी कॉलेज यूनिवर्सिटी उसको स्कैन करके उसको वेरीफाई कर सकती है कि वो जेन्युइन सर्टिफिकेट है या नहीं है. उनको हमें ईमेल करके पूछना नहीं पड़ेगा. इट इज़ वेरी सिंपल. राइट. मोस्ट वेलकम. एनी मोर क्वेश्चंस? This is the learning platform that you already saw. You can sign up for the teaching registry on our website, Teach Today program, and you get a lot of resources to start teaching, early grades, books included. You can look at that. We have diplomas in 3 pathways, as I said. And that's the end of the presentation. Any questions? I'm very happy to answer. Right. Guess not. Well, thank you so much everyone for attending this session. I hope this was useful. If you have सर वन लास्ट क्वेश्चन है सर, वन लास्ट क्वेश्चन है. सर जैसे बुक्स ऑर्डर करवाते हैं तो हमें बुक्स डायरेक्ट कहाँ से मिलेगा? क्योंकि जब पोर्टल में जब इनरोल करता हूँ मैं तो बुक्स अवेलेबल नहीं रहते, स्पेशली ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 के. अभी बुक्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा था. हमने कुछ बुक्स ऑर्डर किए थे पहले, जो कस्टम्स में नहीं, मतलब फेडेक्स के पास ही फंस गए. तो उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह हमने पूरे करके दे दिए, अभी तक उनसे निकला नहीं है. और अभी बुक्स आ जाएंगी विद इन फ्यू डेज. सो ऑल द बुक्स विल बी अवेलेबल. हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है rslawards.in. .in is the India side, .com is the UK side. इंडिया साइड के आप शॉप पे जाके परचेज कर सकते हैं. यू विल गेट द बेस्ट डिस्काउंट्स देयर. और टीचर्स हु ऑर्डर मोर देन 10 बुक्स इन अ बल्क कैन गेट 25% डिस्काउंट फ्रॉम अस. तो वो अवेलेबल रहेगा टीचर्स के लिए भी, एकेडमीज के लिए भी. सो दे कैन फर्दर रिटेल इट एट लेसर मार्जिन इफ दे लाइक. कैन डू दैट. बुक्स टिपिकली हमारे पास अवेलेबल रहता है. बाई चांस अगर कोई बुक नहीं मिलता है, you can go to rslawards.com and purchase a digital version of the book which you can use for the exam as well. So there's no problem. सर फेस टू फेस में वो मैं जहाँ से सेंटर पढ़ते हैं हमारा, वहाँ बोलते हैं कि कॉपी अलाउड नहीं है. No, when you have a proof of purchase, you can use the photocopies. ओके सर. ठीक है. डिजिटल अगर आपने परचेज किया है तो प्रूफ ऑफ परचेज आपको चाहिए होगा. Yes, you can use that. Not a worry. ओके सर. थैंक यू सर. Most welcome. Any more questions? Great. I missed what you mentioned earlier about the learning platform. What was the cost of learning platform for the students? It's £5 a month, 500 rupees a month.
So for the teachers, the learning platform is absolutely free. For each student that signs up, there's going to be a 500 rupees charge per month for the student, for which he gets access to the complete portfolio of RSL, and he does not need to purchase the book for the exam. Just a suggestion, for e-learning platform, it would be great if the students have option to choose between various subscription models. For example, we can provide them only up to one instrument, a smaller subscription package. We are already working on that. This suggestion has already been given to us, given back to the UK office earlier, and they are working on it, and very soon it should be available for a particular subject and a particular grade as well, which will be much, much cheaper. So let's hope that comes through very soon. Absolutely. So please write to us for any queries and support, and we'll be very happy to answer that. Thank you so much for attending and for taking out time this morning. My pleasure to be presenting this to you guys. Thank you, and see you again soon. Take care. Thank you, Ritesh. Thank you, everybody. Bye bye. Thank you, sir. Thank you.